Good morning, dear students. I hope you fit and fine at your home. So we will start some remaining topics regarding lesson 3, charts in Excel. Okay. In previous videos, we have lot of discussion with chart category, chart types, and what is the layout is. Okay. Now this point is adding chart title and axis title. What is saying about this topic? In the previous example, in step 3, you can select the chart layout with required elements like chart title and axis title and data points. Means what the sentence tell you? That tell is how can you add the chart title, axis title, and you know that about how types of axis title, x-axis title and y-axis title. Okay. Now, then by clicking on the chart elements, you can enter the required information like axis title and chart title. You can also add the chart title, axis title and perform other operations using the layout tab. That means लेआउट टैब के हेल्प से आप अपने चार्ट को, जो चार्ट आप बनाते हैं डाटा सीरीज की हेल्प से, उसमें दो एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस एंड एक अनदर वाई एक्सिस. ओके. बट जब भी आप डाटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में वो डाटा किस तरह का है उसका पहले हमें टाइटल देना होता है. तो ठीक टाइटल उसको क्या रिप्रेजेंट करता है कि वाई एक्सिस में जो वैल्यूज हैं वो आपको कैसी वैल्यूज दे रही है, तो उसकी एक आपको हेडिंग, एक टाइटल देना होता है. ठीक उसी तरह से आपको एक्स एक्सिस पर भी वही काम करना है. ओके. दैट मींस एंड आफ्टर दैट यू आल्सो गिव अ टाइटल ऑफ द चार्ट. Those who have provide the which type chart you can create, that directly show by the chart title. Okay. That means in this heading, adding chart title and axis title, in this video we have lot of discussion about how to categorize, how to add, how to insert the axis title. Axis title means y axis title and x axis title and also chart title. Okay. Let me move in next topic. We will define from this topic adding chart title and axis title. This is the next topic, adding the chart title. How to add the chart title? Firstly, I am also introduce you about the chart title. Chart title is directly tells about the which type chart you will created. Okay. So just adding the chart title will be heading. We will start. In chart title gives an idea about the topic of the chart. Means जो चार्ट आप बनाते हैं उसके टॉपिक के बारे में बताता है कि मतलब ये चार्ट जो बना है उसका क्या टाइटल है, वो उसका क्या पर्पज है, वो किस चीज के लिए बना हुआ है. ओके. यू कैन ऐड द टाइटल टू योर एक्सेल चार्ट टू मेक इट मोर मीनिंगफुल. मीनिंगफुल मीन्स यू जस्ट नो अबाउट दैट व्हाट इज मीनिंगफुल. जैसे कि एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, इसका आप मतलब समझ गए ना. जस्ट लाइक जब आप चार्ट टाइटल देते हैं तो आपका जो चार्ट होता है वो मीनिंगफुल हो जाता है कि आप ये चार्ट जो बनाए हैं किस लिए बनाए, किस पर्पज से बनाए, या तो रेनफॉल या फिर शेयर मार्केट या फिर स्टूडेंट्स का रिजल्ट रिकॉर्ड्स का कंपैरिजन का चार्ट. एक चार्ट टाइटल होना मस्ट है जहाँ की आपको पता रहे कि जो चार्ट का कैटेगरी जो डिवाइड हुआ है एक्सिस पे वो हमारा चार्ट किस तरह का है, उसका ओवरऑल रिस्पॉन्स किस बेस पे आना है. ओके. Now we have to use the all step how to add the chart title. Okay. So just we take the step first. This is step first. Click on an empty area of the chart. जहां पर आपने चार्ट बनाया हुआ है और वो चार्ट आपका क्रिएट हुआ है उसके एम्प्टी एरिया में आपको जस्ट क्या करना है, क्लिक करना है. ओके. To which you want to add the chart title. जहां भी आपको चार्ट टाइटल देना हो, तो सपोज कीजिए कि यदि आपको चार्ट का टाइटल देना हो तो आप टॉप पोजीशन पर ही किसी भी
टाइप्स के मैटर को टाइटल आप देते हैं। सो वी जस्ट क्लिक ऑन द एबव पोजीशन ऑफ योर प्लॉटेड एरिया। ओके, हाई और एबव पोजीशन। ओके, सबसे ऊपर टॉप पोजीशन पे आप कहीं ना कहीं एम्प्टी प्लेस पे आप क्लिक करेंगे। देन वी फॉलो द नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। Then you will go on ribbon and from ribbon you can select the layout tab. Okay, now next we move third step, click on the chart title button. Okay, when you are press the layout tab, when you are press the layout tab, you can just check the where the chart title button will be shown, and after that you can click on chart title button. So you will move next step 4, select an option above chart. जो आप लेआउट टैब को क्लिक किए, आप मूव हुए स्टेप के लिए चार्ट टाइटल बटन। देन वी हैव टू सेलेक्ट आफ्टर दैट फ्रॉम हियर you can move that topic, this option above chart option you can click there. Okay, now we just move the fifth point, a text box containing the text chart title will be shown. ये जो चार्ट टाइटल है, सपोज कीजिए कि आपने चार्ट टाइटल की जो आपने चार्ट कैटेगरी तैयार किया हुआ है, ये आपका किसमें है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, सपोज कीजिए तो यहाँ पर हमने क्लिक किया हुआ, तो यहाँ पर एक चार्ट टाइटल का बॉक्स हाईलाइटेड होकर शो होने लगेगा यहाँ पर। ओके, चार्ट टाइटल दिखकर। सो a text box containing the text chart title will be shown on the above position where you first time click on the empty area। जहाँ पर आपने फर्स्ट टाइम क्लिक किया हुआ था वहां पर क्या आ जाएगा, containing the text chart title, and there we can click and you can with the help of keyboard you can type the what is the purpose of this chart. You can mention like that, rainfall, students mark record, student presenting record, that's like. Okay, you can give the, and now we have to discuss about over the adding the chart title, and here we will discuss about to add the chart title all step, how to add the chart title. Now we move to next topic. Okay, from here we will define how to adding the axis title. Okay, axis title is very important. From where, when you create a chart, your chart will be represent all the data with the help of axis. Okay, and what types of axis? Axis here two types, one is vertical and one is horizontal. One is vertical and one is horizontal. Horizontal called x axis, and vertical are called y axis. Okay, this will called y axis and this will called x axis. So in this topic we have to discuss a lot of how to add in the axis title, because here some values are located and here also category located, and this type category also here located, and here this type value will be located. You must to define with the help of give the here y axis title and here x axis title. So let me move. It is also necessary to add axis title to the chart so that a user know what each axis represents. What each axis represent means what? Each axis what represent, मतलब ये जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो कॉलम वाई एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, देन this is necessary point, necessary to add the axis titles. axis titles को ऐड करना बहुत ही
इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये बताता है व्हाट इज द रिप्रेजेंट द ईच एक्सिस और सारे जो एक्सिस हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेट द एक्सिस टाइटल कैन बी एडेड टू बोथ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड एक्स एक्सिस and the vertical axis y axis of the chart. मतलब कि जो चार्ट में जब भी आप बनाते हैं तो चार्ट आपका दो एक्सिस से बनता है. एक तो y एक्सिस, सेकंड x एक्सिस. x एक्सिस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है और y एक्सिस होता है वो वर्टिकल होता है. तो यहाँ पर आपको एक्सिस टाइटल कैन बी एडेड टू बोथ, मतलब कि दोनों पे आपको टाइटल ऐड करना मस्ट होता है क्योंकि वही शो करता है कि ये जो एक्सिस है उसका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो किस तरह का डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो इन एवरी चार्ट यू मस्ट एडेड द एक्सिस टाइटल. लेट मी मूव हाउ टू ऐड द एक्सिस टाइटल ऑन y axis and x axis. Okay, so we have to discuss about this topic. Okay, adding the axis title, follow the given steps. Okay, how to add the axis title? But firstly, you have already cleared how to take a chart title in your computer for a chart. Okay, so in this heading we have to discuss how to insert a axis title, because the axis have two types. Here one types have a vertical axis and one is horizontal. Horizontal are called x axis and this one called y axis. Okay, this is called y axis, this is vertical, and these are horizontal, these are called x axis. So in this video, in this topic, we have to use all the steps how to add the axis title. Okay, let me start from step 1. Click on an empty area of the chart. When you have created a chart, you see on the monitor have a various space with the chart. Okay, suppose you are create this chart. Okay, here you create this chart and some remaining parts are empty. So you anywhere you can click on here if you want to access x axis title, and after that you follow the second points, click on the layout tab from the ribbon. Okay, so and then third step we have to use, click on the axis title button. A drop down menu shows two option. यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलेगा जब आप किस पर क्लिक करेंगे, एक्सिस टाइटल बटन पे आप जब क्लिक कर रहे हैं तो फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट either horizontal axis title और vertical axis title. यहाँ से आपको दो जो कैटेगरी मिल रही है, यहाँ से आप या तो horizontal axis title जो कि x axis title को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आप और vertical axis title, या फिर इसको आप सेलेक्ट करिए. जिसको भी आपको अगर टाइटल देना है यहाँ से आप चूज करें. Then we move ahead. Fourth step, a text box containing the text axis title will be added respectively. We are select the axis title. We have to use axis title. That's here one containing box will be appear. Okay. So after this we can use the keyboard and write about what is represent the x axis title. That's like your class mark, student marks, rainfall, position. So you have to category wise, you can discuss here or write here about with the help of keyboard. You can mention when you click from here vertical axis title, that's here one will located the containing title box, and if you are select the x axis title, that's here containing box will be added. So after that you can with the help of keyboard you can add the title, and
and here this is the more interesting and more meaningful the chart, which type category here show and which type value here will be show. So in this video we have lot of experience or lot of gaining knowledge about the chart title and chart axis title. So we have to move to take a practical video for this topic. now from here we can discuss about how to give the chart title and axis title, because of now this time we have to go about the topic how to add the chart title and axis title. So from this data series, before you make any types of chart, you firstly create this type data series. After that you can create a chart. So we just select it, okay, then we have to go insert tab, and from here you have a lot of types of charts. From here you can click on column charts, and from 2D column you have to select any one, okay. That's look like a chart will be shown here, okay. And if the size will be in large position, you can start down from here, okay. And also you can, this size will be reduced, you can. After that our topic will be how to add the chart title and axis title. Here we have to say that these are marks, those are given 0, 20, 40 are vertical position, this is called y-axis, and their student name will be shown, this is called the x-axis. And here this is the top position, here you can give the chart title. So we have moved to how to add the chart title. So firstly you have to click any empty area in chart. After that you can click from tab, layout tab, and move to chart title option. And here when you click, here you lot of option, that's you can here click the above chart. Here containing chart title will be shown, and after that you can click here, and here you can write with the help of keyboard, what you can give here title, marks comparison, M-A-R-K-S, marks comparison, C-O-M-P-A-R-I-S-O-N. So, and after that if our work will be completed, means chart title will be completed, that's you can move any another place and click there, your chart title will be fixed on the top position of the chart. So now we have to move to mention the x-axis title. So we have to again click on any empty area, and you have to click on layout tab. After that axis titles here located, you can watch, be carefully, axis titles here you can watch, and after that you click here. Here two types of axis, you know that primary horizontal axis title you can give and primary vertical axis title you can give. Now we have to add horizontal axis title, okay, and where you it's locate, title below axis, means axis के नीचे आपका ये title show होगा. Here you will be show the containing axis title. Here you can click on here, and here you can, with the help of keyboard, you can give the title, axis title, student's name, S-T-U-D-E-N-T-S, student's name. So this will also be completed. This is the axis title, okay. axis title में ये क्या है, x axis title को represent कर रहा है क्या, student's name. So after that you can once again move and click on empty area on the charts, and once again you go layout and axis title, and here you can click on primary vertical axis title, okay, primary,
एंड वो वर्टिकल वाला कहाँ शो होगा, एक तो हॉरिजेंटली शो होता है, लेकिन हमारा वर्टिकल वाला जो कॉलम है वो सीधा एकदम लंबवत दिखाता है, इसलिए हम रोटेटेड टाइटल लेंगे ताकि वो उसी के समक्ष एक बराबर दिखे. सो वी हैव टू क्लिक ऑन रोटेटेड. आफ्टर दैट यू कैन क्लिक हियर and once again you move this and you can write with the help of keyboard. What you can here write? Marks, M-A-R-K-S, marks out of 100. Out of 100. Okay, so after that you can click on any another space, those have empty area, and you look like these are all chart, title charts, column chart will be ready, and here you can see this will meaningful chart. Why meaningful chart? That's here you know that which type chart will be created here, that is the mark comparison chart, and which type values or name given here, that's name is given here what, student's name, and here marks out of 100. So this video only for what, how to add chart title and how to add x axis title and y axis title. Okay, thank you.